Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12, today on 19th of October, our topic is grammar preposition. Uh, we will discuss preposition under the following headers: definition, kinds of preposition, for example, simple preposition, compound preposition, phrase preposition, participial preposition, and word followed by preposition. Then, inshallah, we will discuss relations expressed by prepositions with regard to place, time, agency, instrumentality, manner, cause, reason, purpose, position, measure, standard, rate, value, and contrast, concession. Uh, then, in, uh, then inference, motive, or origin. Yes, dear students. Preposition. You know words like to, for, yes, at, of, on, by, yes, along, yes, dear students, across, yes, through, yes, dear students, above, yes, dear students, uh, in, yes, into, yes, under, yes, towards, yes, as far as, yes, dear students, past, yes, beyond, etc. These are known as prepositions. Yes, dear students. Likewise, there are other prepositions, for example, up, down, till, beneath, before, after. So, these prepositions, they usually come before nouns or pronouns. Yes, they come before nouns or pronouns or before verb forms. Verb forms, verb forms ending in ing, ending in ing. Yes, dear students. For example, run to the gate. Yes, run to the gate. Sit in your place. Yes, dear students. What will you get by running away? What will you get by running away? Yes, dear students. Oh, yes, run to the gate. Here, this run, it is connected. The gate is connected to verb run. To, here is preposition. Sit in your place. Here in is preposition. What will you get by running away? By running away. Yes, dear students. Look here. Oh, here to is before the noun, the gate. Yes. Here in preposition is before your pronoun. How? Yes. Here the preposition by, it is before the ing form of the verb running away. Yes, dear students. You know, preposition word, it usually means which is placed before. And position means placed before. So we know a preposition is a word used to show relation between a noun, relation between a noun or pronoun. Relation between a noun or a pronoun. Use the trojan noun or pronoun. Yes, noun or pronoun, it is known as object of preposition. And
some other word in the sentence. Yes. What is a preposition? It is a word used to show relation between a noun or a pronoun, that is called object of preposition, and some other word in the sentence. Yes, a preposition is usually, not always, usually placed before its object, whether it is noun or pronoun. Let me give you some examples to illustrate. Yes, dear student. Yes, there is a cow in the field. There is a cow in the field. Yes, second example. He is fond of tea. He is FOND, fond of tea. Yes, third example. The cat jumped off the chair. The cat jumped off the chair. Yes, dear students. Here is the voice that you asked for. Here is the watch that you asked for. That you asked for. What are you? What are you looking at? What are you looking at? Yes, dear student. In this sentence, there is a cow in the field. In joins noun with other noun. A cow, it is joined with the field, or the field is joined with a cow in the sentence. So here, here what word is joined? Noun is joined to noun. Yes. Second, he is fond of tea. Here preposition is of. Here preposition is of. Here fond, it is fond is adjective, it is joined with tea noun. So here adjective is joined with noun. Yes. And you see this of, it joins this noun with adjective. Third, the cat jumped off the chair. Jumped off the chair. Yes. Here, jumped, it is verb. Then the chair, it is noun. So verb is joined to noun. Yes, dear students. In these three sentences, you see the preposition, it is placed before the noun. In, before the noun, the field. Of, before the noun, tea. Jump, off, it is placed before the noun, chair. So, object of preposition, object of preposition, object of preposition. Yes, dear students. Now this sentence, here is the voice that you asked for. That you asked for. यहाँ देखते हैं आप, ये जो preposition ये last पे रखा गया है, यानी object के बाद. Here is the voice that you asked for. For that you asked, but here it is placed after the object. Yes. Shabash. Last, what are you looking at? What are you looking at? Here also preposition at is placed at the end. At the end. Here the interrogative pronoun what. What it is related. It is related. Yes. हम इस तरह भी कह सकते हैं, we can have said like this, at what are you looking, but here you see at is placed at the end.
interrogative pronoun what, interrogative pronoun what, but the preposition is placed at the end. As I already told you, a preposition is usually placed before a noun or pronoun in form of verb. Yes. Now, let us move to the kinds of preposition. Kinds of preposition are simple preposition, compound preposition, phrase prepositions, participial prepositions, and words followed by preposition. Yes, dear students. Kinds of kinds of prepositions. Kinds of prepositions. Now, number one is simple preposition. Simple prepositions. Yes, you know simple prepositions. For example, made of one word. For example, at. For example, by, for, from, yes, to, in, of, yes, dear students, of, yes, on, yes, out, and likewise through, up, yes, with. These are simple prepositions. Number second, compound prepositions. Compound prepositions. Yes, dear students. Compound prepositions. They are usually formed by prefixing a preposition. Usually a, which means no, or be, which means by, to a noun, adjective, or an adverb. हाँ, कंपाउंड प्रीपोजिशंस वो कैसे बनाए जाते हैं? आमतौर क्या करते हैं? प्रीफिक्स करते हैं एक प्रीपोजिशन, मतलब आमतौर क्या करते हैं हम? ए जिसके माने नोम के हैं और बी जिसके माने बाय के हैं एक नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब को. फॉर एग्जांपल, अबाउट, यस, अबव, यस, across, yes, dear students, along, yes, amidst, yes, dear students, among, yes, dear students, amongst, yes, around, yes, before, yes, dear students, behind, yes, below, yes, beneath, yes, beside, etc. Likewise, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without. These are compound prepositions which are generally formed by prefixing a preposition, usually a which means no, or b which means by, to a noun, adjective, or an adverb. Yes, dear students. Now, number third है phrase preposition. Phrase preposition. You know, phrase is a group of words. So, phrase prepositions, they are groups of words used with the force of a single preposition. What are phrase prepositions? They are groups of words used with the force of a single preposition. For example, according to, yes, in place of, yes, the students, in addition to, yes, in order to, yes, the students, for the sake of,
sake of, yes, likewise, owing to, on account of, away from, along with. Yes, dear students, these are phrase prepositions. Okay, dear students. Now, let us move to number 4, participial prepositions. Participial, participial prepositions. Participial prepositions, dear students, you know words like bearing, concerning, considering, during, notwithstanding, pending, regarding, respecting, touching, and a few similar words which are present participles of verbs or used absolutely without any noun pronoun being attached to them. जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं इसमें कौन से आते हैं? वर्ड्स लाइक बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, regarding, respecting, touching, and few similar words which are present participles of verbs, yani form. They are used absolutely without any noun or pronoun being attached to them. For example, BARRING, bearing accident. Bearing accident. Bearing accident. The mail train will arrive tomorrow. It means if there doesn't happen any accident, the mail train will arrive then tomorrow. Yes. Pending in form of verb, bearing in form of verb, or present participle form. Pending further orders. Pending further orders. Mr. Rahim will act as headmaster. Mr. Rahim will act as headmaster. पेंडिंग, यानी जब तक बाकी ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो मिस्टर रहीम क्या करेगा? एक्ट करेगा एज हेडमास्टर. यस. तो इसी तरह जो कंसिडरिंग है, ड्यूरिंग है, नॉटविथस्टैंडिंग है, रिगार्डिंग है, रेस्पेक्टिंग है, टचिंग, ये क्या है? ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं. तो ये प्रेजेंट, आप जानते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हम एब्सोल्युटली इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी नाउन या प्रोनाउन जो इनके साथ अटैच करते हैं. यस डियर स्टूडेंट. कभी कभी डाउट पैदा होता है क्यों, मतलब प्रीपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या है, या ना हमें उनमें थोड़ा ये क्लियरेंस देनी है. तो क्या है, प्रीपोजिशन जो है ये गवर्न करती है एक नाउन या प्रोनाउन, लेकिन एडवर्ब ऐसा नहीं करता है. मिसाल, फॉर एग्जांपल, आई कुड नॉट कम बिफोर. I could not come before. I could not come before. Or has he come? Has he come in? Has he come in
The wheel came off. The wheel came off. दूसरी जानिब से I came the day before yesterday. I came the day before yesterday. Yesterday. हाँ, I could not come before. Here before it is adverb. I came the day before yesterday. Here before it is preposition. See the difference. Next, has he come in? Has he come in? यहाँ जो in है ये adverb है. हाँ, is he in his room? Is he in his room? यहाँ क्या है? In यहाँ preposition है, यह adverb है. Yes, dear students. Next example. The wheel came off. या ये off जो है ये adverb है. Adverb. इसी तरह यहाँ the driver jumped off the car. The driver jumped off the car. Yes, dear students. यहाँ जो off है ये preposition. वर्ड्स तो सेम है, बिफोर बिफोर, इन ऑफ, लेकिन यहाँ एडवर्ब के तौर काम करता है यहाँ प्रीपोजिशन. जैसे मैंने बताया जो प्रीपोजिशन है ये गवर्न करती है एक नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब ऐसा नहीं करता है. आप जानते हैं वो मॉडिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को. ठीक. हाँ. नाउ वी हैव टू मूव टू kinds of preposition. Number 5, words followed by preposition. यानी words हैं जिनके पीछे जरूरी अपने खास preposition आते हैं. words followed by prepositions. Words followed by prepositions. Yes, dear students. certain verbs यानी certain verbs, nouns, adjectives या participles, उनके पीछे हमेशा लगते हैं particular preposition. ये particular preposition जब लगाते तो indicate करते हैं certain specific idea. हाँ, let me repeat. कुछ verbs, कुछ nouns, कुछ adjectives या participles, उनके पीछे हमेशा खास प्रीपोजिशंस लगते हैं इंडिकेट करने के लिए, to indicate certain specific ideas. For example, Kashmir is famous for its scenery. शाबाश. यहाँ जो प्रीपोजिशन है ये कनेक्ट करती है फॉर को फेमस यानी एडजेक्ट के साथ. तो यहाँ आपने देखा एडजेक्टिव फेमस, इसके पीछे आ गया पर्टिकुलर प्रीपोजिशन फॉर. हाँ. इसी तरह है इंडिया इज टीमिंग विथ नेचुरल वेल्थ. इंडिया इज टीमिंग with natural wealth. Yes, dear students. यहाँ आप देखते हैं टीमिंग जो है, टीमिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लग गई विथ. इसलिए ये खास मीनिंग, खास आइडिया स्पेसिफाई करने के लिए, तो यहाँ टीमिंग के साथ आ गया विथ. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं आपको और सेंटेंस बताऊंगा. ही वॉज इंडोर्ड विद गिफ्ट्स. तो आपने देखा यहाँ इंडो वर्ब है, इसके साथ लग गया पर्टिकुलर प्रीपोजिशन गिफ्ट, ये सॉरी विथ.
he is an authority on English grammar. यहाँ an authority ये noun है, इसके पीछे लग गया an preposition. ठीक. There is still no cure for the common cold. यहाँ लग गया cure, उसके पीछे लग गया for. Cure तो क्या है? Noun. What a contrast to his brother. हाँ, what a contrast to his brother. यहाँ आप देखते हैं ये रिलेटेड वर्ड्स जो है अलग अलग प्रिपोजिशंस लिखते हैं. शायद तुम मेरी बात नहीं समझे. What a contrast to his brother. One sentence. What a contrast between them. तो पहले सेंटेंस में कंट्रास्ट के साथ आ गया तो. हाँ, तो यहाँ देखा आपने एक यहाँ कंट्रास्ट के साथ पहले सेंटेंस में लग गया तो और दूसरे सेंटेंस में लग गया बिटवीन. तो आपने देखा ये रिलेटेड वर्ड जो है उन्होंने अपने पीछे डिफरेंट प्रपोजिशंस टेक किए. ठीक. यस डियर स्टूडेंट. Yes, dear student, now let us move to relations express proportions. Relations expressed by preposition. जो prepositions है ये कौन से relations express करते हैं? For example, place के लिए. तो प्लेस के लिए हम बहुत सारे प्रिपोजिशंस लेते हैं. मैं चंद फ्यू एग्जांपल्स क्या देता हूँ आपको. अबाउट है, अक्रॉस है, अगेंस्ट है, यस, अमंग, यस डियर स्टूडेंट्स, एट, ऑन, बिफोर, यस, बिहाइंड, यस, बिलो, yes dear students, beside, yes dear students, between. Likewise there is by, from, in, into, near, over, round, through, to, towards, under, up, upon, within. Yes dear student. For example, he went about the world. तो आपने देखा ये यहाँ क्या ये एक्सप्रेस करता है रिलेशन विथ रिगार्ड टू प्लेस. हाँ. और she leaned against the wall. तो आपने देखा ये एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन फॉर ए प्लेस. he went about the world. yes, प्लेस के साथ she leaned against the wall, ये भी प्लेस यानी
जगह को क्या करता है या स्पेस को जाहिर करता है। नाउ सेकंड रिलेशन इज विद रिगार्ड टू टाइम। हाँ, टाइम के बारे में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर, एट, बिफोर, आफ्टर, एट, बिफोर, बिहाइंड, yes, by, during, yes dear students, for, इसी तरह है from। yes dear students, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ये प्रीपोजिशंस रिपीट भी होते हैं। आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, बाय, ये कुछ जो है ये रिपीट भी होती है। हाँ, फ्रॉम मिसाल के तौर पर रिपीट होते हैं। इसी तरह है इन, ये भी प्लेस में भी आता है, टाइम में भी। इसी तरह इनटू, अंडर, ऑन। इसी तरह जो ये टाइम इसमें आएगा पेंडिंग, सिंस, थ्रो। हाँ, सिंस, थ्रो आउट, टिल, टुवर्ड्स, अनटिल, विथ, विदन। हाँ, यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। टाइम, फॉर एग्जांपल, आफ्टर हिज डेथ, तो ये टाइम का तज़किरा करता है। इसी तरह है एट इन अर्ली स्टेज, एट एन अर्ली स्टेज, और एट एन अर्ली डेट, DATE, डेट। तो यहाँ ये टाइम का टाइम एक्सप्रेस करता है कौन, आफ्टर या एट। यहाँ जो एट है ये प्लेस को इंडिकेट करता है, यहाँ टाइम को इंडिकेट करता है। चलो लेट अस मूव टू relation expressed by preposition with regard to agency or instrumentality. हाँ, with regard to agency, instrumentality, इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन हम लेते हैं, एट, बाय, थ्रू, इसी तरह है विथ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, he sells goods at auction, इसी तरह है। हाँ, प्लीज सेंड मी रुपीज, प्लीज सेंड मी रुपीज 1 lakh by post। तो यहाँ आप देखते हैं एजेंसी और मेंटेलिटी क्या है। Yes, then there is manner. हाँ, let's take a specific proportion by when there is record of manner. For example, by, with, yes. Example इसमें ले लेंगे one with ease. He won the match with ease. With ease, it indicates manner. हाँ, for example, dying by inches, it indicates manner. Yes, likewise here is cause, reason, or purpose. Cause, reason और purpose। तो इसके लिए हम कौन से क्या कहते हैं प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, for, 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 of, from, through, yes dear students, through, with,
yes, with. For example, he died of fever. He died of fever. Oh, she she shivers with fever. She shivers with fever. Yes, dear student. हाँ, यहाँ ये या कॉज रीजन या पर्पस के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, विथ. यस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ पोजीशन के लिए पोजीशन और पोजीशन के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? ऑन, ऑफ, विथ. ऑन, ऑफ, विथ. For example, the mosque of Umar radiallahu anhu. The mosque of Umar, a man of means, a man of means. Yes, dear students. Now preposition used for major standard rate value. Preposition used for major नाउन के लिए, स्टैंडर्ड मियार के लिए, रेट को उर्दू में शरह बोलते हैं उसके लिए, एंड वैल्यू उसके लिए क्या क्या प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एट, बाय. यस. हाँ, ये हम एट या बाय इस्तेमाल करते हैं मेजर के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, रेट के लिए और वैल्यू के लिए. चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, एट 9% इंटरेस्ट और बेनिफिट. हाँ, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड. यस. हाँ, he is standing by the clock tower. By the clock tower. Yes, dear students. Now, preposition used for contrast, for concession, तो इसके लिए एग्जांपल है आफ्टर. कौन कौन सी प्रीपोजिशन? आफ्टर है, फॉर है, विथ है. हाँ, फॉर एग्जांपल, after every effort, after every effort, he may fail, तो यहाँ जो after every effort आ गया, इसका मीनिंग है in spite of. हाँ, after every effort he may fail, तो यहाँ हमने क्या क्या इस्तेमाल? आफ्टर. हाँ, तो ये कंट्रास्ट के लिए या कंसेशन के लिए. इसी तरह हम फॉर इस्तेमाल करते हैं और विथ इस्तेमाल करते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स. नाउ हम इन्फ्लुएंस यानी जब हम कोई नतीजा निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फ्लुएंस के लिए, किसी मोटिव के लिए, इसी तरह सोर्स के लिए और ओरिजिन के लिए, उनके लिए हम कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम. क्या करते हैं? फ्रॉम.
मिसाल के तौर पर लाइट emanates from the sun, लाइट emanates from the sun। तो यहाँ आप देखते हैं ये सन जो है ये ओरिजिन है या सोर्स है, तो इससे लाइट इमिनेट होती है। ठीक इसी तरह है his sickle comes from his practice। तो यहाँ भी देखते हैं his sickle कहाँ निकलती है, उसकी प्रैक्टिस से। तो इन्फर कर सकते हैं जो वो बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसकी हुनर जो है वो बढ़ती है। इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन जो है हाँ अलग अलग उनका इस्तेमाल देखते हैं, जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस हैं। फॉर एग्जांपल हाँ स्पेस के लिए और टाइम के लिए हम प्रीपोजिशंस जो है उनका अलग अलग इस्तेमाल इंशाल्लाह देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।